Now we will discuss another polygon, that is quadrilateral. It is also called tetragon or quadrangle. अगर हम quadrilateral वर्ड को देखें, quad मतलब 4, lateral sides, तो हम कह सकते हैं a polygon having 4 sides. tetragon वर्ड को देखें तो tetra मतलब 4, gon vertices, a polygon having 4 vertices. Again, quad mean 4 and angle is simply angle, so a polygon having 4 angles. So having 4 sides or 4 vertices or 4 angles is one and same thing. We will say it quadrilateral or tetragon or quadrangle. So its definition is a polygon having 4 sides or 4 angles or 4 vertices is called quadrilateral. It can be classified into 3 main categories. Kite, it is a family basically in which there are many other quadrilaterals. Trapezium, it is also a family and other category. A quadrilateral which is not kite and a quadrilateral which is neither kite nor trapezium will be fall into other category. We will see some examples here. This is a quadrilateral because it has 4 sides, 1, 2, 3 and 4. It has 4 vertices, it has 4 angles. Any definition can be applied, so it is a quadrilateral. This is another quadrilateral, and these are some other quadrilaterals. This is a special quadrilateral. You might say this is not quadrilateral, but this is quadrilateral. This is following the definition because it has 4 sides, 1, 2, 3 and 4. It has 4 angles, 1, 2, 3 and 4. It has 4 vertices, 1, 2, 3 and this one is 4. So it is a quadrilateral. But if we classify the quadrilaterals into 2 major categories, or we can say if we classify the polygons into 2 major categories, one is called convex polygons and other is called concave polygons. These 5 are examples of convex polygons, and this is one example of concave polygon. In fact, these 5 are convex quadrilaterals, and this one is called concave quadrilateral. What does it mean by convex or concave? Take any 2 points within the polygon. If the line joining 2 distinct points is within the polygon, then this polygon will be a convex polygon. आप इन पांचों में से किसी को भी चेक करें, किसी में भी कोई 2 पॉइंट चूज करें, कहीं पर भी 2 पॉइंट्स, सपोज हम एक पॉइंट यहाँ चूज करते हैं, एक पॉइंट बहुत दूर यहाँ चूज करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये लाइन सेगमेंट विद इन द पॉलीगॉन है, विद इन द क्वाड्रिलेटरल है. सो इस टाइप की क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन को हम कन्वेक्स पॉलीगॉन का नाम देंगे. लेकिन अगर हम इस पॉलीगॉन में देखें और इसमें कोई से 2 पॉइंट चूज करें, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट यहाँ चूज किया, एक पॉइंट यहाँ चूज किया और इन दोनों को ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट जो है ये विद इन द क्वाड्रिलेटरल नहीं है. सो दिस इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल. हमारा टॉपिक इस वक्त कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स है. कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स हम सेकेंड ईयर में डिस्कस नहीं करते. So we are going into the main category of polygons, that is convex polygons. In fact, we are discussing convex quadrilaterals.
नाउ हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल क्लासिफिकेशन चार्ट। Quadrilateral has two main categories, two main families. One is called kite family and other is called trapezium family. We will go into detail. We will discuss the definitions in detail in next slides. I haven't mentioned other category here. We can mention it here like this, other category. A quadrilateral which will not be type of kite or trapezium will be fall into other category. So kite has a further subtype that is called rhombus, and rhombus has a subtype that is called square. अगर हम ट्रेपेजियम या ट्रेपजाइड को डिस्कस करें, ट्रेपजाइड इसे यूनाइटेड स्टेट्स में कहा जाता है और इसी शेप को यूनाइटेड किंगडम में या यूके में ट्रेपेजियम कहा जाता है। ट्रेपेजियम की दो मेजर कैटेगरीज, एक को हम पैरेललोग्राम का नाम देते हैं और दूसरे को आइसोसेलेस ट्रेपजाइड या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम की दो मेजर टाइप्स, रोम्बस, रोम्बस काइट की भी टाइप है और पैरेललोग्राम की भी एक सब टाइप है। इसी तरह से पैरेललोग्राम की दूसरी टाइप रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की सब टाइप के तौर पर स्क्वायर अपीयर होता है। इसी तरह अगर हम आइसोसेलेस ट्रेपजाइड को देखें तो इसकी सब टाइप है रेक्टेंगल और फिर रेक्टेंगल जो है उसकी सब टाइप स्क्वायर। सो इन सारी शेप्स का आपस में क्या कनेक्शन है, इनकी डिटेल डेफिनेशंस क्या हैं, क्या कंडीशन काइट पर अप्लाई हो तो वो रोम्बस होती है और क्या कंडीशन रोम्बस पर अप्लाई हो तो वो स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह ट्रेपेजियम कैसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनती है या पैरेललोग्राम बनती है, और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल या रोम्बस कैसे हो सकता है, ये तमाम चीजें हम आने वाली स्लाइड्स में डेफिनेशन और डिफरेंट कंडीशंस के तौर पर डिस्कस करते हैं। सो let's have another slide that is discussing this classification. In another way, we can say quadrilateral or tetragon or quadrangle. This has three major types. We can say kite, trapezium or trapezoid, and other category. Kite has further subtype as rhombus, and rhombus is going to square. Trapezium or trapezoid has two major types. One is parallelogram, one is isosceles trapezium, and isosceles trapezium is going to rectangle and rectangle is going to square. So we can say square is a type of isosceles trapezium, square is a type of trapezium. We can say square is a type of rhombus, we can say square is a type of kite, because if we follow this path, square is a type of kite. And square is also a type of parallelogram, because parallelogram has two types, one is rhombus and one is rectangle, and rhombus and rectangle are going to square. Square is a type of rhombus and rectangle. So this is a simple slide discussing the classification. In fact, these two slides are doing the same purpose. Now we will discuss the first one, that is kite. A quadrilateral having two pairs of equal adjacent sides. In other words, in four sides, two adjacent sides are equal to each other and other two adjacent sides are also equal. एक ऐसी quadrilateral जिसमें दो pairs हों equal adjacent sides के। इसको अल्फाज में एक्सप्लेन करना मुश्किल, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। This is a classic example of kite. It has two pairs of equal adjacent sides. These two sides AB and BC are equal to each other and these are adjacent.
Similarly, side AD and DC are also equal to each other and they are adjacent to each other. दो adjacent sides अगर equal हों किसी quadrilateral में और ऐसे दो pairs हमें मिल जाएं, जैसे ये हमें दो pairs मिले, this is a pair, जैसे ये हमें एक पेयर मिला और ये दूसरा पेयर मिला। सो अगर किसी शेप में हमें दो इस तरह के पेयर्स मिल जाएं तो हम ऐसी शेप को काइट का नाम देते हैं। Another example, this shape you might say this looks like rhombus, but it is satisfying the basic definition of kite because these are two adjacent sides. If we discuss first one, these two, these are equal in length and these two are also equal in length. So we have got two pairs of equal adjacent sides. So this is a kite. आप ये कह सकते हैं कि इसकी तो चारों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है? अगर हमें दो पेयर्स मिल रहे हैं, दो पेयर्स का आपस में डिस्टिंक्ट होना कोई जरूरी नहीं। ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। हम इन दो साइड्स को आपस में इक्वल कह लें एक पेयर, इन दो साइड्स को आपस में इक्वल कह लें दूसरा पेयर। सो rhombus is satisfying the definition of kite. As we have seen in previous slide that kite is a subtype of, as we have discussed in previous slide that rhombus is a subtype of kite. We will see another example. आप कहेंगे ये तो स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, लेकिन ये काइट की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है। इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। जिस तरह यहां पर हमने डिस्कस किया, ये रोम्बस थी और इसकी चारों साइड्स इक्वल थी। ये स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। हम इसको कह लें कि ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, आपस में इक्वल हैं, एक पेयर, और ये दूसरा पेयर, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो दो पेयर्स अगर हमें मिल रहे हैं तो ये एक काइट है। आप इसे स्क्वायर कहें, लेकिन ये बेसिकली काइट फैमिली से ताल्लुक रखती है। अगर हमें जज करना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल काइट फैमिली से ताल्लुक रखती है या नहीं, तो हम उसमें टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स तलाश करेंगे। सो इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तो वो क्वाड्रिलेटरल काइट फैमिली से ताल्लुक रखती होगी। आप उसको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्क्वायर या रोम्बस कह रहे हो, लेकिन अगर उसके डायगोनल्स 90 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये फैमिली जो है ये काइट फैमिली है। काइट फैमिली में एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2। Suppose this is one diagonal and its length is A, and this is another diagonal and its length is B. So we will say that A into B divided by 2 will be the area of this kite. If this length is A and length of this diagonal is B, then this formula will also be applied here. Similarly, this is A and this is B. So area can be found by this formula. In kite family we will use simple this formula. We have got some special cases for kite. First one, an equilateral kite is called a rhombus. Equi word is taken from equal lateral sides. एक ऐसी काइट जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों उसे हम रोम्बस का नाम देते हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आप ये प्रूव करो कि क्या ये 4 वर्टिसेस रोम्बस बना रहे हैं, आप उसकी
चारों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करें। सपोज वी हैव गॉट 4 वर्सेस ए बी सी एंड डी, तो आप ए बी बी सी सी डी और ए डी 4 लेंथ्स फाइंड आउट करें। अगर वो 4 लेंथ्स आपस में इक्वल हों तो वो रोम्बस होगी। इक्विलेटरल अगर होगी तो वो रोम्बस होगी। इनफैक्ट इक्विलेटरल quadrilateral is called a rhombus. An equiangular kite is called a square. स्क्वायर में अगर आप देखें तो चारों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, 90s हैं। ऐसा रोम्बस में नहीं था। जो प्योर रोम्बस है उसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर किसी काइट में चारों एंगल्स इक्वल हों तो हम उसे स्क्वायर का नाम देंगे। कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो इक्विएंगुलर हो उसे स्क्वायर का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो रेक्टेंगल भी हो सकती है। लेकिन काइट अगर इक्विएंगुलर हो तो हम उसे स्क्वायर का नाम देंगे, क्योंकि जब हमने इसे काइट कह दिया तो इसमें 2 पेयर्स इक्वल एडजेसेंट साइड के हमें मिल चुके हैं, और फर्दर ये इक्विएंगुलर है तो ये स्क्वायर होगी। इस आर्टिकल को और काइट की डिफरेंट ट्रांजिशंस को कि काइट कैसे रोम्बस या स्क्वायर बन सकती है, इसको इस वेबसाइट पर भी विजिट करके देख सकते हैं।